बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग क्यों करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारे शरीर को, स्ट्रेचिंग करने से कैसे हम अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं, आज हम इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज लाइक जरूर करते जाइए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। जानते हैं कि स्ट्रेचिंग हमारे शरीर के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर बात की जाए स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है, तो स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर को सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारे शरीर का वजन कम होने लगता है। ये कैसे होगा? क्योंकि जब हम शरीर से भारी होते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, तो हम अपनी एक्सरसाइजेस को जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे अगर आपको अपनी मसल्स को इतना खोलना है, लेकिन आपकी वो टाइट होने की वजह से वो मसल पूरी तरह से खुल नहीं लेती है, पूरी तरह से अपनी जो रेंज है वो कंप्लीट नहीं करती है। तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, आप अपनी मसल्स के फाइबर्स को पूरी तरह से स्ट्रेच कर पाते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस को पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो मसल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, टोन होती हैं, तो उनके मसल्स फाइबर्स इतने टाइट हो जाते हैं कि उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मूव नहीं होता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है वो हमारी मसल्स को प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करने से हमारी मसल्स के फाइबर्स जो है वो खुल जाते हैं। खुलने से उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपकी बॉडी को, मसल्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल पाते हैं। तीसरा इसका फायदा होता है कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से एंडोर्फिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। एंडोर्फिन हार्मोन हमारी बॉडी में दर्द निवारक गोली की तरह काम करता है। ये हमारी बॉडी में से पेन जो होता है, कहीं भी आपको पेन आता है तो हमारी बॉडी से जितना ये एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, हमारी बॉडी में से पेन जो है वो दूर होगा। ये सबसे अच्छा फायदा है स्ट्रेचिंग करवाने का। और ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करके रखता है। जितना हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाता है, हमारे सभी ऑर्गन्स मेन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से उनकी फंक्शनिंग होती है। फोर्थ हम इसकी बात करते हैं तो स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। हम बहुत अच्छे से, हमारी बॉडी लचीली हो जाती है। तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं स्ट्रेचिंग करने के। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ जिससे आप हफ्ते में एक दिन जरूर करेंगे। वैसे आप डेली जब भी एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद थोड़ा बहुत अपनी जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए और जॉइंट्स के लिए आप जरूर पहले स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। और ये सभी एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ 20 सेकंड से 25 सेकंड तक ही करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.